Beta, it gives necessary information. Okay, that is essential to distinguish which thing or person we are talking about. Okay, very clearly I'm telling to you that defining relative clause, it gives necessary information that is essential to distinguish which thing or person we are talking about. Okay, one thing. This is the speciality of defining a relative clause. Okay, and number two, we do not use commas in it. Okay, we do not use commas in the sentence. Number two, this is the second identity of that. And number three, we can use that in place of relative pronouns, because relative pronouns are used in defining relative clause. Is that clear? Like who, which, right? But in place of who or which, we can use that. Last time I told you that who is used for humans and which is used for living and animals or the non-living things. But that is relative pronoun which can be used in place of the two, who and which. That एक ऐसा relative pronoun है जो who और which दोनों की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है. Okay, that is common. Okay, नेक्स्ट है, हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस को डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में इसको इसको ओमिट भी कर सकते हैं. इन रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट भी कर सकते हैं. राइट, आर यू फॉलोइंग? लेकिन कब? जब हम डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा यूज करेंगे इन द एंड. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक द सॉन्ग आई सैंग? हमने ये नहीं लिखा कि डू यू लाइक विच आई सैंग और दैट आई सैंग, बल्कि क्या किया, डू यू लाइक द सॉन्ग. अब डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, आई सैंग. डू यू लाइक द सॉन्ग आई सैंग, हमने क्या किया, विच और दैट को ओमिट कर दिया और डायरेक्ट विदाउट एनी कॉमा हमने एक सेंटेंस बनाया, एंड इट इज योर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ओके, इज दैट क्लियर? Right. Now see, next is non-defining relative clause. Non-defining relative clause. Okay, Manisha, thank you for giving your clearance that everything is okay. Okay, beta, next is non-defining relative clause. अब इसमें जरा देखिएगा, पहले में कॉमास इस्तेमाल नहीं होते थे, राइट, और इसमें कॉमास इस्तेमाल होंगे. Ansa, thank you, beta. That you said everything is fine. Okay. इसमें कॉमास इस्तेमाल होंगे. Commas are inserted in it. Where? In non-defining relative clause. Right? No any necessary information to distinguish which thing or person we are talking about. कोई खास और इम्पोर्टेंट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जो किसी चीज को डिस्टिंग्विश करे कि हम किसके बारे में, बिकॉज देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर गिविंग just any extra information about that subject. For example, my brother. Okay, my brother, just only one brother who lives in Canada is older. आप माय ब्रदर के बाद कॉमा लिखेंगे क्योंकि मैंने कहा कि इसमें नॉन डिफाइनिंग में कॉमा आता है. डिफाइनिंग में कॉमा नहीं आता, मगर नॉन डिफाइनिंग में हम कॉमा लिखते हैं. ओके, माय ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा इज ओल्डर. सो just only one brother, and I'm just mentioning and talking about him. Okay, that he lives in Canada. Okay, number 3, no use of that. डिफाइनिंग में हम दैट इस्तेमाल कर सकते थे, किसमें, हु और विच की जगह पर, बट यहाँ पर हम दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे.
Okay, no use of that. We cannot use that instead of who or which, right beta? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी मैंने ये एग्जांपल दी थी कि these cars which cost a high amount are made in Japan. ओके, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, which हम साथ में इस्तेमाल करेंगे. ओके, हम ये नहीं करेंगे कि these cars that cost high amount. हम which की जगह पर that इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओके, which है तो which ही हम लिखेंगे. ओके, नंबर 4, हम इस डिफाइनिंग में क्या होता था, हम हु दैट और विच ओमिट कर सकते थे, बट इसमें नॉन डिफाइनिंग में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट नहीं कर सकते. आई एम टेलिंग यू इन उर्दू एंड इंग्लिश सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट. ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस हु दैट विच कैन नॉट बी ओमिटेड, राइट? कैसे? सपोज दे इंट्रोड्यूस्ड मी, लास्ट टाइम में मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी. दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू जॉन कॉमा हु आई लाइक्ड इमीडिएटली, जिसको मैंने फौरन पसंद किया, उससे मिलकर मुझे अच्छा लगा. तो यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे कि दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू जॉन आई लाइक्ड इमीडिएटली. आई लाइक्ड इमीडिएटली नहीं, आपको हु लिखना पड़ेगा, राइट? दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू जॉन हु or whom I liked immediately. So it is the non-defining relative clause. Defining mean एक से ज्यादा आपके पास ऑप्शन है और उसमें से किसी एक की बात आप कर रहे हैं, राइट? नॉन डिफाइनिंग में एक ही सब्जेक्ट है और आप उसी के बारे में ही बात करते हैं. मैं जरा इसके पिछले बुक, आपकी बुक जो है उसके पेज नंबर 27 पर देखिए. यहाँ पर इसकी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा. पेज नंबर 27 इट इज, यहाँ पर है ये पेज नंबर 27 पर. बेटा देखिए सबसे ऊपर ये जो पिंक सब ब्लॉक है इसमें देखिएगा. ओके, द Amazon river basin, what is written here? The Amazon river basin comma which lies just below the equator. एक ही Amazon river basin है, कोई ज्यादा नहीं है कि हम उसमें कोई क्या नाम है डिस्टिंग्विश कर सके. So the Amazon river basin एक सब्जेक्ट, that is the noun, and इसके बारे में कुछ और रेफर किया जा रहा है, कुछ रेफरेंस दिया जा रहा है. वो क्या है? which lies just below the equator. फिर आगे उसकी बाकी सारे, that's the rest part of the sentence, covers about 40% of South America. Okay, is that clear बेटा? और उससे नेक्स्ट जो है वो भी एग्जांपल देख लें. ये 27 पेज पर राइट नाउ. मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड इज हीटेड. ओके मनीषा, मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड इज हीटेड. ओके, विच कॉजेज इट टू राइज. ये आपका नाउन है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि कॉजेज इट टू राइज. सो एक्चुअली ये नॉन डिफाइनिंग एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक ही सब्जेक्ट है और उसी के बारे में कुछ हम बात करते हैं, उसकी एग्जांपल देते हैं. सो आई डू होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ओके, दैट्स वेरी गुड. मे आई सी योर एसएमएस about your clear, fine, okay, etc. Please let me see on your screen. I'm watching your screen and waiting for your SMS. All the students. Okay. Joy, Sansa. Okay, Sameer. Okay, I have received your, okay, Stash, I received your SMS with the words that everything is clear, sir. Okay, beta, thank you so very much. Yet, if there is any ambiguity regarding that, must share with me, okay, consult with me, and I'll try my pretty best to clear that. बाकी स्टूडेंट्स भी और जैसे ज़क्रिया और मुझे और भी स्टूडेंट्स को
देखना है कि अभिषेक, ऋषा, अश्वल, बिस्मा, बेटा, ऑल ऑफ यू जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी नजर में नहीं है. I'm seeing your list. Okay, I see you. And I hope that right below that there is written what is a tsunami. Actually, this is a lesson that is about a tsunami who affected an island, Robinson Crusoe. Okay, that is the largest of islands. Okay, uh, near the coast, I think. What's that? Okay, it's the largest of the islands which make up the Juan Fernandez archipelago off the coast of Chile. Okay, right. First of all, what is tsunami that attacked the island? You can see us on your screen. Tsunamis are waves actually caused by sudden movement of the ocean surface due to earthquakes, right? Landslides on the seafloor, land slumping into the ocean. Beta slumping means collapsing, okay? Land slumping or collapsing into the ocean. Large volcanic eruptions, impact in the ocean. Eruption mean explosion or the outbreak, okay? So what is tsunami are waves caused by sudden movement of the ocean surface due to earthquakes, landslides on the seafloor, land slumping, collapsing into the ocean, large volcanic eruptions, impact in the ocean, right? Earthquake, earth, earthquake causes tsunami. Energy accumulates in the override plate until it exceeds. Beta, let me tell you something extra. That is, energy accumulates, beta, energy accumulates in the overriding plate until it exceeds the frictional forces between the two stuck plates. When this happens, the overriding plate snaps back into an unrestrained position. This sudden motion is the cause of the tsunami because it gives an enormous, huge shock or the push or the pull to the overlying water. At the same time, inland areas of the overriding and overruling plate are suddenly lowered. That becomes the cause of tsunami. Okay, so this is actually the tsunami. Now see what's there. Better next upcoming is your context. कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज अ पॉसिबल हम इसको रीड आउट करें तो वो ज्यादा बेहतर है. एनी वन ऑफ यू प्लीज गिव रीडिंग. एनी वन ऑफ यू प्लीज. कोई रीडिंग कर सकता है बेटा? हेलो, अगर चले, अगर कोई रीडिंग नहीं कर रहा, यस बेटा लिख लें तो ज्यादा बेहतर है. खदीजा आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि ये आपके रैकेट में रहे, क्योंकि पेपर मेकर जो है वो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है. ओके, इज फ्री टू चूज द क्वेश्चंस. ओके बेटा, चले मैं आपको इसकी ना स्टोरी बता देता हूँ. ओके, इसकी एक आपको समरी दे देता हूँ इस पूरी स्टोरी की. राइट बेटा, this is the story actually of an island that's name is Robinson Crusoe near Chile, where only 12-year-old a girl saved the lives of the islanders with her wisdom.
Okay, it was 6 a.m. on Saturday, 17th Feb. Year is 2010 in San Juan Bautista, the island's only town. Okay, this is the location that I'm telling to you. Suddenly, she noticed that the boats in the harbor are bobbing and dipping up and down and crashing onto each other. Feeling something wrong, she hurriedly ran to the town square to ring the emergency bell. Town square was at the distance of 400 meters from her home. In this way, she saved round about 650 people of the island. Okay? When people heard the sound of the bell, they ran to the high ground for the safety and escaped themselves from the massive wave caused by the earthquake off the coast of Chile. Okay, the wave was, beta, the wave was 20-meter high, which destroyed the houses and buildings immediately, and it was terrifying. It was a terrible scene. So this was the synopsis or the summary of the story. Okay, that has been given here. Right. After listening and learning the story, let's see what is next. The best tweet with reason. Beta page number 28, part 2. Read these 3 tweets about the story in exercise 1, which is best. Give reasons for your choice. First of all, let's see. First is a tsunami hit an island near Chile. Most people survived because a girl rang the emergency bell. Most houses and buildings were destroyed. Number 2, most people but not buildings survived the tsunami on Robinson Crusoe Island near Chile, thanks to a girl of 12 who rang the emergency bell. The third is a tsunami hit Robinson Crusoe Island near Chile. A girl rang the emergency bell. People ran to safety. Houses and buildings were destroyed. So, Peter, I have chosen the third one. Okay. You also can choose first or second, but you will have to give some reasons so that how did you choose that. So because I have chosen the third one, so listen carefully why I have chosen this. Peter, a tsunami